I'll tell you what, एक दिल की तमन्ना है कि that they stop auditioning me. Yes, there is a wish. Same thing with Isha, my previous co-star. Isha Singh. I love her acting. Yes, I am a fan of her. I think I'll not get another show after this. मेरे को लगता है इसके बाद मेरे को काम मिलने नहीं वाला. मेरे को इस वाला के बाद ये लगा था, मैं ईशा को बोलता था यार मुझे कोई फोन करने नहीं वाला यार. टीवी का बड़ा स्टार तो मैं अभी भी अपने आप को नहीं मानता. I don't think I'm a star of television. I think I'm an actor who's just been very lucky with 2 shows. Hi Adnan, welcome to E-Times TV. How are you doing? I'm doing really well. How are you doing? I am good, thank you, and it is a pleasure to have you on our for an interview. So tell me, how's life? What's happening? Shooting हो रही है back to back? Yeah. It's not too bad though. It's not like other sets have been on. क्योंकि first of all, the production house की planning was incredible है. Plus it's a Monday to Friday show, and it's actually pretty relaxed. I won't lie. It's pretty nice shooting with these guys. Yeah. And जैसे आपने बताया आप मॉम के प्लेस पे हैं, तो आज छुट्टी का दिन मिला है, तो कैसे बिता रहे हो उसको? How are you spending your time? आज एक्चुअली फैमिली में कुछ हो गया था. I won't talk too much about it, but there was an issue, so we were dealing with that. The whole family was dealing with it. I just came. इसलिए I'm supposed to be wearing Riyan Raghuvanshi's clothes, but I didn't have time. I just ऐसे आ गया. Okay. So बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है क्योंकि शो ही अपने आप में बहुत अलग है. We rarely see such shows on Indian television, and we know कि लोग जिस तरीके से शो से जुड़ रहे हैं, that speaks अपने आप में कि क्यों लोग इतना पसंद कर रहे हैं शो में. How has been your journey now playing this character so far? It's been the most challenging, demanding, and most complicated character I've ever played. Okay. इतने layers. पहली बात तो character in itself has so many layers and so many different dynamics to him. Dynamics, yeah. उसके अलावा why I said demanding and so forth is because my director actually, director Ravi sir, is a perfectionist. वो आदमी थोड़ा अतरंगी. I think he's a genius. Like कभी कभार मैं उनको शुरुआत में उनको देख के ये सोचता था कि how is this man in TV? But then you know what? After with this show, my love for TV increased. So I said everything is perfect, but the man is a taskmaster, so that's why it's a very demanding thing. Every day on set, he requires nothing less than perfection. Yeah. कभी भी वो बहुत rarely कुछ और चीज से सेटल करते. वो हो गई दूसरी बात. और तीसरी बात, जो कहानी in itself is so beautiful. तो being a part of that, just being a small cog, एक छोटा सा chess का piece in this big game, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है. And और एक बात आपको बताऊंगा, यार इस शो में the caliber of actors is phenomenal. Yeah, I agree. Man, I joke sometimes. I'm like, did the casting director, Reema, her name is, our casting director's name is Reema, did she just go into a room which said on top India's best actors and just pick out 6 people and 7 people and come back? How can all of the castings be so phenomenal? So playing with these guys, and then the story, and then the director, and on top of that the character, it's just been for me nothing short of like a blessing. Yeah, but इतने complex characters play करने के बाद, for actors usually switch on switch off काफी बार मुश्किल होता है. What is the process that you follow? Is it the same for you also कि जब आप एक character में घुसते हो तो थोड़ा उसके लिए आप अपना अलग से time devote करते हो? What is your process as an actor? I don't have a switch on, switch off thing. Okay. I have to be in that world. I have to be there. I have to, even when it's cut. I'm not talking about specifically, जैसे हम लोग, those stories we hear about, like extreme stories जहाँ पर वो character अभी उसको चोट लगी थी, उसने काट दिया, वो तो नहीं करता मैं. But like, I don't know how else not to be. So I have to be in that world. I have to be in that area, in that psychology.
if my character is feeling confident, so off set, off camera, I have to keep myself confident the whole time, because I don't know how to just go there on the spot and be confident. I don't know how to do that. So but I enjoy it too, because मालूम पहले मैं इंटरव्यूज में सुनता था कि एंड मेरे को बहुत बहुत अजीब लगता था, मेरे को सुनाई देता था कि फ्रॉम दीज बिग एक्टर्स एंड अ लॉट ऑफ दीज एक्टर्स दे वुड से ओ यू नो वी गेट टू लिव द लाइफ ऑफ दैट कैरेक्टर एंड ये एंड वो. एंड जब शुरुआत में ना मेरे को बहुत अजीब लगता था. मैं बोलता था यार कैसे इन्हें ये लोग क्या लिव लाइफ कैसी कैसी बातें कर रहे, इधर तो कुछ समझ में नहीं आ. एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट एंड दिस थिंग, एंड थोड़ा अभी थोड़ी सी समझ जो आई है मेरे एक्टिंग को लेके, तो वो मेरे को वो जुमला समझ में आया, एक्सपीरियंसिंग द लाइफ ऑफ दिस कैरेक्टर. लाइक ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात कहूँ कि मैंने कभी लाइफ में कभी कुछ एक अदनान ने वो मोमेंट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, बट वियान का भी एक मोमेंट है. तो ऐसा पहले होता था मेरे करियर में, मैं बहुत डर जाता था कि यार मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा, तो मैं कैसे करूंगा. आई डोंट नो व्हाट दैट फीलिंग इज लाइक. बट अब हो गया कि हाँ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने का मजा, यानी कैरेक्टर भी शायद फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस कर रहा होगा, you know, so let me feel it, and whatever I feel in that moment is the experience in itself. तो कुछ ये है, it's been a beautiful journey for me, honestly. I love it, and I this is the set that I want to get up and go all the time. Like ish subhanallah, this is also the same thing that you know I want to go to work. ये छुट्टी आ जाती है, मतलब फ्लो पकड़ता हूँ मैं अच्छी, like I get the flow of things, and एक छुट्टी आ जाती है and I'm like यार कल छुट्टी क्यों है यार, बाद में दूँ ना, तो ऐसे हो जाता है यार. So it's a kick. Set पे होना is a kick for you. It gives you a kick. It's this. Yeah, well said. Yeah. And you know, your chemistry with Aditi, you know, on screen, बहुत organic, बहुत natural लगता है, and that is, I think, that is the prime reason why people are so attached to the show. लोग feel करते हैं. पर्सनली ऑफ स्क्रीन आप लोगों की बॉन्डिंग कैसे होती है? क्या हर सीन के पहले यू नो यूजुअली डेली सोप में एक्टर्स की हमेशा कंप्लेंट होती है कि हमें तो यू नो ताजा स्क्रिप्ट मिलता है, सीन्स लिखे जाते हैं, बोला जाता है कि परफॉर्म करो, उसका भी अपना चार्म है. आई डोंट लुक डाउन अपॉन इट, बट आई एम सेइंग कि ऐसा होता है काफी बार शोज में. जब आप और अदिति काम करते हो साथ में और आप इतनी तारीफ भी कर रहे हो द वे थिंग्स आर प्लान्ड इन दिस प्रोडक्शन हाउस, आप लोगों का साथ में कैसे प्रोसेस होता है? डू यू गाइस डिस्कस सीन्स, रिहर्स, जो यूजुअली टेलीविजन में टाइम नहीं मिलता? You know, for films and OTT projects, there are workshops. For TV, it doesn't happen. I agree, it doesn't. But as you rightly pointed out, कि इसका चार्म अलग होता है. ये मीडियम ऐसी है, हम ये बैठ के नहीं बोल सकते कि यार टाइम नहीं मिलता. तो अभी मैं आपको एक बात बोलूं, वाकिन फीनिक्स ऑस्कर विनर, कोई पुरानी फिल्म की उसकी कोई इंटरव्यू थी, एंड यही मैं आपको कोट करूं, 3 दिन पहले मैंने ये सुना एंड मैंने बोला यार ये तो हम लोग का एक मेंटालिटी हो जाता है. तो उसको वो बोल रही थी कि आपने बड़ा इमोशनल सीन किया फिल्म के क्लाइमैक्स में, कैसे गया? बोलती हाँ अच्छा गया. तो बोलती पर आपने तो आउटडोर में शूट किया था, तो मुश्किल होगा ना कि आपको 10-12 बार टेक करना पड़ा होगा, इमोशनल सीन है. तो उसने देखा, मुस्कुरा, बोला हाँ बट दैट्स द डिमांड ऑफ द क्राफ्ट, फिल्म मेकिंग की डिमांड है कि अगर साउंड वाले को साउंड बराबर से नहीं मिला फिर से करो, अगर कोई पीछे दिख गया फिर से करो, फोकस चला गया फिर से करो, एक्टर को नहीं मिल रहा है फिर से करो. As a matter of fact, अभी 3 दिन पहले ही मैंने किया, and I kind of got annoyed in the end because I had to do like one moment 15 to 20 times, and it was different things happening. But that is the industry, and you find your ways. If you have to find, अभी for example आपको बोलूं, मेरे को पता चला कि अगले सीन में अगले 1 घंटे के बाद एक बड़ा सीन अभी फ्रेश आया है, उसमें बहुत लाइंस बोलनी है, बहुत डायलॉग्स है मेरे. मेरे को ये सीन में जैसी मेरे को पता चल गया, तो जैसी मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने देखा मेरे क्लोजेस खत्म हो गए, अभी दूसरे एक्टर के क्लोजेस मैंने 1-2 बार पढ़ लिया नेक्स्ट सीन के, एटलीस्ट एक आइडिया है. सो यू फाइंड योर वे, you do what you have to, you find your way. Now coming back to your main question of bonding with Aditi, first of all, she's such a nice human being. She's a genuinely very nice human being, okay? And we gel really well. And another thing is we're not the best of friends on set. Yeah. But that is partially because we both are so into our work कि टाइम पास बहुत कम होता है. हंसी मजाक होती है
थोड़ी एक दो बातें हो जाती है, बट हम लोग दोनों वो भी अपने काम को लेके बहुत सीरियस है. शी इज अ फुल ऑन प्रोफेशनल and I try to be serious about my work as well. So we have this lovely relationship. I think she's an amazing human being. I thank the Lord, I thank God that I've gotten such a lovely person to work with. As a matter of fact, everyone, I'll give a shout out to मेरे पूरे शो में आप यकीन नहीं मानिए मेरी बॉन्डिंग समर के साथ जो एसन प्ले कर रहा है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, इतनी सुपर्ब है. बिकॉज अगेन he is a very big professional. अपने काम को बहुत सीरियसली ले रहा है. Same thing with me. So ऑटोमेटिकली एक वो इज्जत आ जाती है कि यार हम दोनों को पता है हम दोनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये काम है, ये अभी जो सीन करना है ये कैरेक्टर, एंड एवरीवन एल्स इज सो इनटू देयर वर्क, नो. सो या द बॉन्डिंग हैज बीन रियली गुड ऑन दिस सेट. टच वुड मे गॉड कीप इट दैट वे. एंड एज यू सेड कि अभी परसों ही हुआ था कि आई हैड टू गिव 15 or 14 takes for a scene, one moment. Yeah, for one moment. How do you decide कि मैंने 14th वाले में इमोशन मेरा बहुत ऑर्गेनिक रहा है, अच्छा रहा है, एंड या 10th वाले में था एंड आई हैव टू रिपीट दैट इमोशन, क्योंकि वो इमोशन तो आप अगर बार बार फील करने लगे तो वो बहुत ही मैकेनिकल हो जाएगा, ऑर्गेनिक नहीं रहेगा. तो एज एन एक्टर फिर वो आप कैसे महसूस करते हो? The biggest thing that I had to learn, and I'm still learning, is to let go of what I did in the 14th take or in the 13th take or in the 12th take. अगर ये 15th take में 100% इमोशन फील नहीं हो पाया, ठीक है. अगर दूसरे रास्ते से आपने आया एंड वो पहले वाला और अच्छा था, ये वाला डजंट मैटर. देखिए मेरा काम है, तो क्या होता है ना, एक प्रेशर हट जाता है. सबसे पहली बात तो एक प्रेशर हट जाता है कि मुझे वो ही करना है. एंड दूसरी चीज, यू फाइंड न्यू वेज ऑफ कमिंग बैक, डिफरेंट वेज. सो नाउ इट कम्स ऑन योर चैलेंज ऑफ अ मेंटल क्रिएटिविटी के आप कैसे वही मोमेंट तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते ढूंढो. और but again coming back to that point, I think the biggest thing any actor listening and something I have to really is that really instill in myself is that if it happened in their take and it's not happening in your take, you try your best. You try your best as hard as you can, as well prepared as you can. You do all of that stuff. But अगर नहीं हुआ ना, कोई बात, ये सबसे बड़ी बात है. ये मैं सीख रहा हूँ ना, जितना मैं सीखते जाता हूँ ना तो थोड़ा फिर खेलने लगता हूँ वापस से, क्रिएटिविटी वापस आ जाती है. नहीं तो क्या होता है ना, you won't believe it becomes like a test. Yeah. You know what I mean? And I didn't get into acting to like to do pass or fail. Yeah, my ego, I have an ego and my ego wants to be praised and I want people to say, oh wow, what an amazing scene, oh wow, what an actor. But you know what that takes away? That takes me away from the fun of the craft. And the fun is in the creativity. तो कैसे creative रहना कि ठीक है वो 10वें टेक में हुआ, चलो ये टेक में नहीं हुआ, अब क्या करें यार, ट्राई किया नहीं हुआ. अदनान, और एक बात कि आपको ऑनलाइन बहुत ज्यादा प्रेज करते होंगे लोग, फॉर योर क्राफ्ट. आपको लोग जब मिलते होंगे आपके शो के लिए, आपके कैरेक्टर के लिए तारीफ मिलती होगी. बट काफी बार ऐसा होता है कि जो शोज लोग एक्चुअली बहुत जुड़ते हैं उसको वैसे डिजायर्ड नंबर्स नहीं मिलते टेलीविजन में, क्योंकि टेलीविजन में एक तरीके का रिपीटेटिव काम होता है. अगर एक चीज सक्सेसफुल हो गई तो उसी के ऊपर 3-4 चीजें और बन जाती हैं फॉलो करते करते. अगेन आई एम नॉट लुकिंग डाउन अपॉन, क्योंकि वो मार्केट की डिमांड है, वो ऑडियंस की डिमांड है कि उनको वैसे शोज बनाने हैं. आफ्टर ऑल एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू बिजनेस. बट जब ऐसे अलग शोज बनते हैं कभी कभार उसको वो डिजायर्ड नंबर्स नहीं मिलते. एज एन एक्टर क्या वो आपको अफेक्ट करता है और यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन योर वर्क? In the start, when the TRP did come out the first time, I did face a little bit of like I'm like, what is this? But then again, coming back to my previous point was two things. Firstly, I asked myself, I said, was I doing it for the TRP? If that was the case, I would have chosen a channel with a broader network range. But मेरा intention Sony को join करने के लिए यही था कि I wanted to try my hand at different shows, a different story, a different form. I've always heard they do different. Yeah. So I had to remind myself of that and just put my head down. Don't look at if the world is clapping or not, or if I'm being
patted on the back. Just look down and concentrate on making my next, just मेरा next scene या next moment उस scene में creative and fun and enjoyable for myself and in line with the scene. And शायद ठीक है, एक 1 million people might not be clapping for me, but maybe 5 people or even one person will say, you know what, this is nice, it connects with me, and that's a job. And I feel that's the way for anything, because everything you do is not going to get praises, everything you do is not going to get pats on the back. You're going to make choices that are going to be terrible. The show might not work, the story, the film might not work. Kuch bhi, life mein kuch bhi ho sakta hai, right? You're not always going to hit a 6 on every ball. If you hit it on 6 like Rinku Sharma, अगर आपने मार भी दिया, आप हर ओवर में नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. You know what I mean? So yeah, coming back to my previous point, you just put your head down and enjoy your work. At the end of the day, अगर आप घर जा रहे हो and आपने enjoy किया अपने आप, ये it's a very personal thing ना, बहुत आप अच्छे से सोते हो. You sleep really well, and I apply that for me. Yeah. But as an actor, क्या आप अपने contemporaries का भी काम देखते हो? Do you look what's happening in television, and are there any male actor or female actors you think are doing a great job and you take them as inspiration? Yeah, you don't get time. Okay. No, I'll tell you. I'm the kind of person who sees anybody's work and thinks it's fantastic. I'll give you 2 examples. I saw a clip on Twitter of Harshit Chopra in Ye Rishta Kya Kehlata. कोई बहुत अच्छा moment था. Like बड़ा सोच रहा है, and then he decides and he picks up the phone and he's like, he says something, I don't remember the line. I was blown away. Just that moment, I was like, मेरा दोस्त शक्ति, उसका previous show का एक clip मैंने देखा जो अदिति के साथ था. Very intense scene. Silsila. I was blown away. Yeah, I was blown away. Like, I'm like, Shakti is such a good actor. I did not know. I saw Nakil के कुछ clips. Twitter पे clips बहुत चलते रहते हैं ना. I saw Nakil के कुछ clips. I said, यार इन लोग, how मैं उस zone में चला जाता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, इन लोग क्या कर रहे हैं. Like, इन लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं. They are so good. Shabbir, उसका तो मैं fan कब से हूँ. When I see Shabbir is acting, I'm like, man, what am like. So, same thing with Isha, my previous co-star. Isha Singh. I love her acting. Yes, I am a fan of her. उसकी एक्टिंग का दीवाना हूं मैं. इतना अच्छा लगता है ना जब वो एक्ट करती है, तो मैं उसको देखता हूँ. तो मैं जब लोगों को देखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ, अदनान तू तो गलती से लोग तेरे को पसंद कर रहे. Like literally मैं बोलता हूँ, तुक्के में God has put love, your love in people. नहीं यार, this is how I feel. If you see, like I see their clips and I'm like, they're so good. I'll give you another name, Manit. बालाजी का शो जो कर रहे थे, Manit, उसकी एक्टिंग देखता था. मैं बोलता हूँ, he's so good. Another guy, I'll tell you names. मैं सबका देखता हूँ. मैंने उसको देखा. Karan Jotwani. When I was doing Ish Subhanallah, he was doing. आपके आ जाने से. I forget the name. आपके आ जाने से. Yeah. I thought he was phenomenal. मैं तो इसलिए मैं देखता हूँ, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ लोगों को, बट मैं क्यों ज्यादा कोशिश करता हूँ नहीं देखने को ना. फिर मेरे अंदर ये आ रहा था कि यार अदनान, you are probably not on the right track. Like you are not like, but then yeah, I have to remind myself at the end of the night that look, everyone has a different style, everyone has their way of communicating their emotion. Yeah. I think it's filled with lovely actors. I'm blessed. I'm just blessed. But do you take that as a competitiveness आ जाता है, या you know what do you feel at that moment जब आप देखते हो? I think I'll not get another show after this. मेरे को लगता है इसके बाद मेरे को काम मिलने नहीं वाला. मेरे को इस वाला के बाद ये लगा था, मैं ईशा बोलता था यार मुझे कोई फोन करने नहीं वाला यार, कोई नहीं. इसके बाद भी मैं 1-2 सीन करता हूँ और मैं गाड़ी चलाते वक्त सोचता हूँ, I think this is the last time they're going to call me. इसके बाद तो नहीं आएगा. Because I see, like I'll tell you, I see so much talent when I see it outside in my show. When I see, I'm like, man, everybody, all these guys, everybody should be leads. Like, I'll tell you a story. I had once auditioned with this girl for something. I won't tell you for what. I had auditioned with her for something.
I have never been blown away by anybody. I was blown away by this girl. She was so good. In an audition, पहली बात तो audition में सबकी फटती है. मैंने आज तक audition में ना किसी को बहुत अच्छे से perform करते हुए नहीं देखा है. Myself included. Because it's a very nerve-wracking thing. It's like, it's tough. Trust me, it's like one of those hardest parts of probably this craft. This girl comes in. She was so good, man. She was so good, man. My heart went out. I said, when I saw that, and I see myself getting a show like Ish Subhanallah, and then getting a show like Katha, I'm like, yo, man, I'm just lucky, man. I'm just super lucky. But Adnan, काफी सारे एक्टर्स को लगता है कि आफ्टर डूइंग अ फ्यू प्रोजेक्ट्स उनके फेस वैल्यू पे या उनके काम के भरोसे पे सीइंग देयर वर्क दे शुड गेट वर्क. आपके साथ वैसा होता है या यू आर ओके विद गिविंग ऑडिशंस? I'll tell you what, एक दिल की तमन्ना है कि that day stops, that they stop auditioning me. Yes, there is a wish. Because first of all, auditions also, like, it's so, like, it's one of the hardest things to walk into an audition room and audition, man. It's like the energy is like, it's just so, like, you have to, like, man. Exam hall में enter कर रहे हैं, ऐसा लगता है? Yeah, man, it's like, all the eyes are on you. Obviously they're doing the job, but already it's a character you've not done, you're not loose with it, you're not playing with it yet, and those eyes and just the room and the silence, like, it's like crazy. It's funny because बाद में वो silence and वो आंखें ही चाहिए जब मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे मुझे. मैं चाहता हूँ silence हो जब मैं act कर रहा हूँ. पर वो सिनेरियो थोड़ा है, तो या दिल की तमन्ना तो है, but my modesty, I come from a very modest household. My mom is a very modest person, so that modesty has somehow seeped through me. When मेरा ego बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा, I'm like Mahatma Gandhi, no, please, but my modesty kind of reflects in this thing that I know, very rare will I have to और हाँ, काम मालूम मैं थोड़ा सा भाव खाता हूँ in a very new like if somebody new from film school is making like a short film, then थोड़ा सा I'll be like, what's up, man? मैं टीवी का बड़ा स्टार हूँ. इतना नहीं करता हूँ, but audition का अच्छा लगता है जब नहीं करते. टीवी का बड़ा स्टार तो मैं अभी भी अपने आप को नहीं मानता. I don't think I'm a star of television. I think I'm an actor who's just been very lucky with 2 shows. Yeah. Like, it doesn't, I don't feel like a star. I feel like an actor. But you don't mind giving auditions right now. Of course you not. feel course there not. will be a stage. You wish for it. But अभी आपको दुआ करता हूँ. हाँ. और मैं दुआ करती हूँ, वो दुआ कबूल हो जाए. Please. But एक बात बोलूँ आपको, मालूम ऑडिशन का मैंने और एक चीज क्या रियलाइज किया, ये हर चीज so, grass is always greener on the other side. That's the case. जब ऑडिशन नहीं होता, 1-2 शॉर्ट फिल्म की ऑडिशन नहीं हुआ, सीधा सिलेक्ट हो गया ना, एक दूसरा डाउट, अरे यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं, वो लोग ने ले तो लिया है मुझे, बट am I right for this character? Like, what is, it's so कभी-कभी वो ऑडिशन देते वक्त ही पता चल जाता होगा कि I can crack this. You get a feel for it, But जब वो नहीं होता, अदनान, when you feel for that character कि you can do this best, but सामने वाला वो आपको उस नजरिए से नहीं देख रहा है, is it heartbreaking? शुरुआत में तो बहुत था, अभी हार्ट ब्रेकिंग नहीं है, थोड़ा हर्ट होता है. Like, I've auditioned for probably some projects, probably, okay, this is what I think. I hope it's not my ego, but मेरे को ऐसा लगता है मैंने ऐसे कुछ projects से audition किया है, 1-2, जो अभी के टाइम में in the past 5 years they've been very, very big projects. And it's come out and it's been wonderful and the people have done remarkable and this and that. But nahin, you know what, I've got this very strong belief now, very, very strong belief that what is meant for you is going to find you. Yeah. And if something's not happening right now, maybe you need to learn more, maybe you need to up your craft a little more, या शायद आपको कुछ और tangent पे जाना है. I don't know what it is, but I feel
sorry, but I'm going to quote something from the Quran. It's called Tawakkaltu illallah, which basically means, I think this is what it means. Exact translation नहीं है, but उसका मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट करो एंड बाकी छोड़ दो. समझ रहे आप? तो हर ऑडिशन में, हर सीन में, हर शो में you come, as I said, you put your best foot forward, you give your 100%. कभी कभार आप फिसल जाओगे, कभी कभार अच्छा नहीं आएगा, ऑडिशन फेल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाओगे. So yeah, I don't feel heartbroken anymore. अभी तो नहीं, अभी बहुत टाइम हो गया. I haven't felt heartbroken. संस्कृत में ही ऐसा कुछ है कि आप अपना कर्म करिए, बाकी छोड़ दीजिए, फल आपको मिलेगा. Yeah, you just, and also फल भी छोड़िए. Sometimes you know what, sometimes you don't get it. So why I like that statement in Tawakkaltu illallah is, you know what it's teaching you? What's the true meaning behind it? Is that, I think, this is at least what I think. And Shah Rukh Khan pointed this out in an interview. He said it in a different time. He said, fall in love with the process. Don't be in love with the destination. And you know what? इतना मजा आता है ना, आप फिर एक 0.5 TRP की शो करो या इश्क सुभान अल्लाह का आप 2.2 TRP की शो करो. रात में जब मैं घर आता हूँ, मैं उस शो में भी और इस शो में भी ना बड़ा खुश, क्योंकि मुझे पता है आज मैंने काम किया, मेरा प्रोसेस, मैंने मेहनत की. हमने बहुत सारी बातें कर ली. अदनान, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, प्रेशियस टाइम. फैंस को जाते जाते क्या कहेंगे जो लोग कथा को इतना पसंद कर रहे हैं एंड हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड यू फ्रॉम योर फर्स्ट शो? Again, just thank you. I've said it so many times, that's why it's become funny for me. But अभी मैं थोड़ा सा एक्सेप्ट करने लगा हूँ. But मेरे को इतना जब प्यार मिलता है ना, तो मैं थोड़ा अजीब हो जाता हूँ. Like क्या है यार, सच है यार? Are they just like, my brain comes up with weird reasons for their love? They're like, no, just because I'm nice, or you know, maybe सबको इतना ही प्यार मिलता है, हम लोग को कुछ स्पेशल प्यार नहीं मिल रहा है. ऐसी चीजें मेरा दिमाग बोलता है. But I have seen these guys are crazy. My fans, the show's fans are pretty crazy. They're very intense. They do like really, really sweet things, very, very sweet things. They come together and they send letters, they send things that are very meaningful. So I'm just going to tell them, I don't know what I've done to deserve so much love from you all, but thank you from the bottom of my heart. Thank you so much, Adnan. It was pleasure talking to you. आपकी कहानी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, and I hope you enjoyed the interview. Yes, I did. Yes, it was fun. Thank you so much. Take care. Thank you. See you. Bye-bye. Bye-bye.